A very good morning to everyone. So today what we're starting up is the chapter In the Kingdom of Fools. It is your Few Moments book. We'll be discussing the questions and answers of this chapter. So let's start. In the beginning, we'll be discussing the short answer type questions of this chapter. So question number one. What are the two strange things that the Guru and his disciple find in the kingdom of food? So, as we know, the two things were that the day and night were reversed. कि मतलब जो दिन के काम है वो रात में होते थे और जो रात का काम है दैट इज स्लीपिंग वो दिन में होता था. सेकेंडली सारी चीजों की कॉस्ट एक ही थी चाहे कुछ हो वो. दैट वाज वन डू. Then his question number two, why was the kingdom called the kingdom of fools? क्यों बोलते थे? Because जो king है और minister both of them were very big idiots. They decided to change night into the day and day into the night in order everyone to wake at night till their fields and sleep during the day. Question number three. Why did the people follow the orders of the foolish king? ये जो foolish king है उसके orders को क्यों माना जाता था? Because they were forced to do so. कि उनको पता था अगर वो orders को disobey करेंगे तो उनको punishment मिलेगी ही मिलेगी death वाली. Question 4. What astonished the Guru and his disciple at the grocer's shop? They were astonished that everything at the shop, whether a measure of rice or a bunch of bananas, that all the things they cost is the same. That was one to do. Question number 5. Compare and contrast the feelings of the Guru and his disciple about the kingdom they found themselves in. So, the Guru tha, he wanted to leave the kingdom. He didn't want it to stay there. And the disciple, he thought, he refused to leave because he felt everything was so cheap and good and he could eat everything that he wanted. Question 6. Why did the Guru leave disciple and go away to the away from the kingdom of fools? Because the disciple refused to listen to the Guru's wisdom and insisted on staying there. The Guru gave up and he left from that kingdom. Question 7. What made the disciple grow fatty? Why was he growing fatty and fatty? Because he ate so many things. Everything costed one doodoo. He ate rice, bananas, ghee, wheat, and all these things. So, as a result, for this, he grew fatter and fatter. Question 8. Why does the writer say that one bright day a thief broke into a rich merchant's house? What is strange about this statement? The strange thing is that the thief took place during the daylight hours. In any other place, thief would typically take place during the dark night, right? However, the people in the kingdom of fools slept during the day and woke at night. Thus, the thief was also doing opposite to the normal thief. Question 9. Why did the thief's brother run to the king? Because he to complain about the fact that his brother had been killed because the wall of the house he had gone to rob had fallen upon him. It was a very foolish thing, right? Question 10. Do you think the plea made by the thief's brother was strange? Yes, of course. It was strange because instead of hiding the fact that his brother was a thief and had died trying to rob the merchant's house, he went to the king without any fear and demanded justice. It was not going to be a justice for him, but usko to punishment milna chahiye. Question 11. Do you think it was normal for the king to have demanded an explanation from the merchant for the death of the thief? Give reasons for your answer. No, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये illegal type है, right? Illegal thing नहीं है. And yet the man he had tried to rob was being put on trial, even though the thief died because of the wall collapsing.
The merchant was not possible for the death. तो जो merchant है वो death के लिए बिल्कुल भी responsible नहीं था. Question 12. Why does the merchant try to save his life? He tries to do so by blaming the bricklayer for building a wall that was so weak that it collapsed on the thief, and the thing was, as a result, he was killed. Question number 13. Who does the bricklayer blame for the weak wall that he had built? Now, the bricklayer, he built a weak wall, and what was the reason here? The reason was the dancing girl. She was distracting the bricklayer while the bricklayer was making the wall. Okay, so thus he was distracted and he made a weak wall. Question 14. Who does the dancing girl blame for her going up and down the road in front of the bricklayer? Now, why was she going here and there when the bricklayer was making the wall? It was so because the goldsmith to whom she ordered the jewelry, he was not making it at time. Thus, she had to visit to him several times and thus walked upon and down the street in front of the bricklayer, and thus he was getting disturbed. Question number 15. How does the goldsmith save himself from the wrath of the king? राजा से कैसे बचता है गोल्डस्मिथ ने? हमारा जो रिच मर्चेंट है उस पे ब्लेम लगा दिया कि उसने उसको प्रेशराइज करा था for making the jewelry for him, thereby not leaving him for with any time to complete the dancing girl's jewelry. Therefore, he blames the rich merchant for being directly responsible for the thief's death. Question number 16. How does the blame come back to the rich merchant who had been accused in the first place? सबसे पहले rich merchant को बुलाया था because it was his house, but last में भी उस पर ही क्यों blame आया? That we need to mention. तो क्यों आया? क्योंकि जब rich merchant को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमारा लास्ट में वहां पे जाते जाते इन्वेस्टिगेशन में गोल्डस्मिथ की बारी आई, और जो गोल्डस्मिथ था वो ज्वेलरी बना रहा था फॉर द रिच मर्चेंट्स फादर, क्योंकि वहां पे शादी होने वाली थी, वेडिंग होने वाली थी. तो हमारा जो रिच मर्चेंट है उसके फादर ने उसको प्रेशराइज करा था गोल्डस्मिथ को कि आपको हमारी ज्वेलरी बनानी है एट टाइम. तो उसने उसको बनाया, और जो डांसिंग गर्ल है वो डिस्ट्रैक्ट हुई थी बाय द गोल्डस्मिथ, इसीलिए गोल्डस्मिथ को बुलाया, और जो गोल्डस्मिथ है उसकी वजह से उसने बोला कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिच मर्चेंट की, उसकी वजह से मैं नहीं बना पाया द ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल. तो लास्ट में पनिशमेंट हमारे पास रिच मर्चेंट की आई. क्यों? क्योंकि उसका फादर ही था जिसने ज्वेलरी को ऑर्डर करके रखा था, तो इसीलिए पे ब्लेम आया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड कंडक्ट ऑफ योर फादर. Question number 17. Why did the king not decide to execute the merchant even though he found him responsible for the death of the thief? So he decided not to execute the merchant because he felt he was too thin to be properly executed. क्यों भाई executed का यहाँ पे मतलब है कि death के लिए द एग्जीक्यूशन फॉर द डेथ पर्पस, जो हमारे पास स्टेक होती है तो राउंड स्टेक ऐसी हमारे पास स्टेक होती है, तो उसमें हमारे पास जो रिच मर्चेंट था he was too thin कि वो नहीं आ पाता. The rich merchant was not able to fit in that stake, so he was quite thin. तो इसलिए कोई अभी उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई कोई फैटर इंसान को लेकर आओ. Question number 18. How did the Guru divine that his disciple wasn't able? He was having magical powers कि भाई वो फ्यूचर में देख सकता है, फ्यूचर को देख सकता है, पास्ट को देख सकता है, प्रेजेंट को देख सकता है. तो जब उसके डिसाइपल ने प्रे किया अपने दिल से क्योंकि वो मुसीबत में फंस गया था, तो उससे ये गुरु ने उसकी बातें सुन ली. Question number 19. Why did the Guru pretended to fight with his disciple? Because उसको किंग को कंफ्यूज करना था
किंग को कंफ्यूज क्या करना था कि ट्रिक खेल रहे थे वो कि मैं पहले स्टेक में जाऊंगा, मैं पहले स्टेक पे जाऊंगा. सो दैट वाज द रीजन फॉर द फाइट, या हम कह सकते हैं डिबेट का वो रीजन था, ताकि जो किंग है उसका मिनिस्टर है उनकी डेथ हो जाए, वो उनकी जो ट्रिक है उसमें फंस जाए. Question number 20. What reason does the guru give for his eagerness to die? क्यों? क्योंकि जो पर्सन पहले डाई करेगा, the person who will die for the first on that stake, तो क्या होगा, वो उसका जब जन्म होगा, so he'll become the next king of that kingdom. 21. Why did the king and minister decide to take place of the guru and disciple? क्योंकि उनको आने वाले जन्म में क्या बना था, मिनिस्टर बना था और किंग बना था of that particular kingdom only. Question 22. Why did the king and his minister disguise themselves as the guru and disciple? क्योंकि उनको क्या बना था, ताकि जो उसका एग्जीक्यूशनर है, मतलब जो उसको मारने वाला है, जो स्टेक पर चढ़ाने वाला है, जिसको हम हिंदी में जल्लाद बोलते हैं, राइट. तो वो जो जल्लाद है वो उनको कंडेम करे और उनको ही वो मार दे. Question number 23. Why did the people of the kingdom panic at the sight of the bodies of the two executed men? They panicked because they realized that the two had been executed as a king and the minister of that particular kingdom, और जो हमारे गुरु है और डिसाइपल वो नहीं मरी है. Why did the people approach the guru and disciple? क्योंकि अभी वो चाहते थे, उनको एक नया किंग, एक नया मिनिस्टर चाहिए था उस किंगडम को चलाने के लिए, इसलिए वो गुरु और डिसाइपल के पास गए, क्योंकि उन्होंने तो स्मार्टर ट्रिक खेल के वो जो प्रीवियस किंग था, प्रीवियस मिनिस्टर था, उनको मार दिया था, राइट. इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि वो दे आर क्वाइट स्मार्ट है ना, कि वो हमारे राज्य को, हमारे किंगडम को अच्छे से चला पाएंगे. दस उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करा कि भाई आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाओ. Number 25, the last short answer type 1. On what conditions did the guru and his disciple agree to rule the kingdom? भाई कंडीशन ये थी कि भाई जो old laws हैं उनको चेंज कर दिया जाए और नए लॉज को बनाया जाए. सभी लोग दिन में काम करें, रात में सोए, एज वेल एज सभी का जितना वन डू कॉस्ट पहले था साइन कर रखा था, वो वन डू कॉस्ट ना रही, जितना होना चाहिए मान्य वही होना. This was about the short answer type question. Moving on to the long answer type questions of this chapter. Question number 1. Question says, why did the disciple decide to stay in the kingdom of fools? क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें बहुत सस्ती थी. Was this a good idea? No, it was not at all a good idea, क्योंकि हमको पता नहीं है कि जो फूल लोग हैं वो कब अपनी बाजी पलट दें, क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं. What does it reveal about his character? कि वो बहुत ज्यादा greedy था और immature उसकी सोच थी, उसको अपने गुरु की बात माननी चाहिए थी, कि उसकी body. It also shows that he placed his body's carvings of food above his loyalty and obedience to his guru. गुरु की बात ना मान के अपनी बातें, अपनी जो मनमानी है उसने वो करी थी. Question number 2. Name all the people who are tried in the king's court. This is a very important question. And give the reasons for each of the trials. क्यों बुलाया गया था? सबसे पहले हम बहुत सारे लोगों को बुलाया था. तो सबसे पहले जो हमारे पास आया था, that was जो हमारा थीफ था, थीफ का ब्रदर आया था, राइट. जो थीफ का ब्रदर था वो अपनी जस्टिस मांगने के लिए वो इंसान आया था, और उसने बोला कि जो रिच मर्चेंट है उसकी दीवार की वजह से वो उसका भाई, उसका जो चोर भाई था वो मर गया. तो रिच मर्चेंट को बुलाया गया. रिच मर्चेंट ने बोला वीक वॉल थी इसलिए गिर गई भाई. अभी वीक वॉल क्यों थी भाई, ये इसके लिए क्वेश्चन उठा. तो वीक वॉल वाज मेड बाय दैट पर्सन ब्रिकलेयर. तो ब्रिकलेयर बोला कि भाई मैंने वीक वॉल इसीलिए बनाई क्योंकि एक डांसिंग गर्ल मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो रोड से बार बार पास आउट कर रही थी. डांसिंग गर्ल को बुलाया. डांसिंग गर्ल बोली कि भाई मेरे को इसलिए आने जाना पड़ रहा था क्योंकि जो गोल्डस्मिथ है, द गोल्डस्मिथ, उसने मेरी ज्वेलरी को टाइम पे रेडी नहीं करा. दैट्स व्हाई आई हैड टू गो. फिर गोल्डस्मिथ को बुलाया. भाई गोल्डस्मिथ बोला
भाई मेरे को रिच मर्चेंट के घर पे डिलीवर करना था बहुत सारी ज्वेलरी फॉर द वेडिंग, तो बहुत सारी ऑर्नामेंट्स बनानी थी, तो इसीलिए लास्ट में जो हमारे पास आना था बोझ सारा का सारा किस पे आया, सारा आया हमारे रिच मर्चेंट पे। क्यों? क्योंकि जो रिच मर्चेंट है, रिच मर्चेंट का ही तो पापा था, जो वो रिच मर्चेंट का जो फादर था उसी के घर पे तो हमारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो हमारे गोल्डस्मिथ को भेजने थे, राइट? दैट इज व्हाई। Question number 3. Who is the real culprit according to the king? King के हिसाब से the real culprit is Ritmogen's father, who had ordered the goldsmith to make the jewelry. However, since he was dead, his son would have to be punished in his place. He escaped punishment because when the stake for impaling the criminal was sharpened and ready, the minister felt that the merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king, who agreed with his observation. They thus decided that they need a man who is fatty enough to get fit into the stake. Number 4. What were the Guru's words of wisdom? And does the disciple remember them? The Guru's words of wisdom were, "This is a city of fools. You do not know that what these fools will do." The next thing. The disciple remembers these words when he is imprisoned just because he was fat enough to fit the stake, which had been prepared as a punishment for a crime he had no knowledge about. बिना आपके बिना कुछ काम के बस मोटा होने के कारण उसको स्टेक पे चढ़ाया जा रहा था। Question number 5. How did the guru manage to save his disciples' life? उसका जो गुरु है उसके पास तो magical powers थी। जैसे ही डिसाइबल ने उसको प्रेयर करा कि भाई मैं फंस चुका हूँ मेरे गुरुजी, आप मुझको बचा लीजिए, तो जो गुरु है उनके पास प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी सारी चीजें देखने की पावर थी। तो गुरु ने उनकी प्रेयर सुन ली और वो इमीडिएटली वहां पे प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उन्होंने एक ट्रिक खेली उस राजा के साथ कि उन्होंने बोला कि भाई वो लड़ाई करने लगे डिसाइपल के साथ कि मैं पहले फांसी पे जाऊंगा, मैं पहले एग्जीक्यूट होऊंगा। डिसाइपल बोला मैं हूंगा। तो राजा ने सोचा भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो राजा ने पूछा, तो गुरु ने बोला कि जो इस नई स्टेट पे सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो अगले, जब नया बर्थ होगा, मरने के बाद नया बर्थ होता है, तो नए बर्थ में वो बनेगा राजा, और जो सेकेंडली एग्जीक्यूट होगा हिल बी द मिनिस्टर। तो राजा के दिमाग में तो भाई वाह कि भाई मैं अगली बार भी इसका राजा बनना चाहता हूँ इसी किंगडम का। तो उसने और मिनिस्टर ने ये प्लान बनाया भाई कि हम बनेंगे राजा और मंत्री अगले जन्म में भी। तो वो गुरु और डिसाइपल की जगह स्टेक पे जाने लग गए, एग्जीक्यूट होने लग गए रात को ही, ताकि जो एग्जीक्यूशनर है वो उनको पहचान ना पाए और वो मर गए। तो मतलब what does it reveal about the king and his minister? They were completely fool, they were big idiots, right? तो इसकी वजह से हमारे जो गुरु हैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी हुई कि भाई वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मार्ट है। So thank you all. This much was for today. We'll meet in the next class with a new topic. Till then, keep learning and keep enjoying.